हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड यू पीपल आर सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो आज की क्लास में अगेन वी आर गोइंग टू डू सम मोर क्वेश्चन एंड दिस टाइम वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम कैपेसिटर। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। थ्रू क्वेश्चंस वी विल बी लर्निंग कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो लेट्स डू दिस। टेक योर टाइम, डू इट। एनीवन गॉट समथिंग? चलो ऐसे क्वेश्चन को समझते हैं, हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। बेसिकली हमारे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, वी आर गिवन सम प्लेट्स, ठीक है, एंड दिस प्लेट्स आर कनेक्टेड विथ अ बैटरी. Let's say this positive terminal of the battery has a potential of V plus and this negative terminal of the battery has a potential of V minus. So this point has a potential of V plus because this point is directly connected to the positive terminal of the battery through conducting wire. So same potential. Similarly, this point will have same potential as that of negative terminal of the battery. Now, how you will to different plates, how you will give potentials? If we see, yes, Harshita, that's correct. Very good. So this is having V minus potential. This is directly connected to this plate. So this plate has a potential of negative. This plate has a potential of negative. Now come to the plus potential wala point. This is connected to three plates, right? So this is having potential V plus. This is having potential V plus. And this also is having potential V plus. Now you just see here how many capacitors are there. अगर आप capacitors यहाँ पे देखो, तो this is one capacitor having potential difference V plus minus V minus. This is also another capacitor having potential difference V plus minus V minus. This is also another capacitor sharing the same potential difference, and also this one sharing the same potential difference. So how many capacitors are there? There are four capacitors. यहाँ पे कितने capacitors हैं हमारे पास? Four. और ये सारे फोर कैपेसिटर्स जो है दे आर इन पैरेलल. यू कैन सी हियर दे आर इन व्हाट, दे आर इन पैरेलल बिकॉज
all are connected to the same this battery like this. So यहाँ पे अगर आपसे पूछता है what is the C equivalent, so C equivalent will be 4C, where C is the capacitance of each plate. each plate का capacitance यहाँ पे आप क्या लिखोगे, epsilon A by T. ठीक है, so this is the equivalent capacitance, but here we are asked about the distribution of charge. Now let's distribute the charge over here. Since यहाँ पे 4C आया है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, I will take out 4Q charge coming from the positive terminal and minus 4Q charge coming from the negative terminal. मैंने 4Q लिया क्योंकि we have 4 capacitors of equal capacity. They all are in parallel. So charge will get divided. Here 4 plus 4Q is coming. What will happen to this plus 4Q charge? Look at the plate 5. If you look at plate 5, this plate 5 is contributing in the formation of a single capacitor. Done it? So it will take here plus Q charge. Okay? This is having plus Q charge. No charge on this surface. Okay? Let's talk about plate 1. So plate 1 will receive which charge? Again, plate 1 is contributing in the formation of single capacitor. So I'm giving it again plus Q charge. Okay? And if you talk about plate 3 is contributing in formation of two capacitors. So it will have plus Q charge on this side and plus Q charge on this side. And equal charges will be there. So this is plus Q, this is plus Q. Total plus 2Q. Why I divided equal charges? Because capacity of each individual capacitor is same. That is why. Negative charge की अगर आप बात करो, तो negative charge will go on two plates, 2 and 4. Both 2 and 4 are contributing in the formation of two capacitors. So both 2 and 4 will get minus 2Q charge. ठीक है, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, चार्ज ऑन प्लेट 1. प्लेट 1 पे अगर आप चार्ज की बात करो, देन दिस इज योर Q which is equal to how much? Q equal to what? CV. So C is how much? Epsilon naught A by D into V. है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हर प्लेट के बीच का? V. कैपेसिटी इज दिस, सो Q का वैल्यू इज दिस. Now if you talk about plate 4 is receiving which is plate 4? This is plate 4, right? So plate 4 is receiving minus 2Q charge. So that is minus 2 epsilon naught A by D into V. So correct answer will be what? This. ठीक है, चलो now let's move ahead. I hope it is clear. किसी को doubt हो, you can stop me. Now let's do this question. This is relatively very easy question, but still do carefully. ठीक है, take your time.
I got one answer. That's correct. Okay, let's solve it together now. Okay. Okay, one correct, one incorrect answer. Let's check. Okay. So what is question? In the given circuit, the steady current, the potential with steady current, the potential difference across the capacitor. सबसे पहले तो ये when the situation is of a steady current, in that case, capacitor will behave like insulator. Then you already know this. Now, if current is allowed to flow in the steady state, then current will go like this. It won't cross into the capacitor arm because that's broken. That is acting as an insulator. So no current will go like this. Current in steady state will be equal to how much? This is now a single loop circuit. If you solve single loop circuit, everything in single loop used to be in series. है ना? So if this circuit looks like this, this is V, and this is 2V, this is 2R, this is R. What will be the value of E equivalent? This has a tendency of sending current in this sense. This has a tendency of sending current in this sense. Both are oppositely directed. So net EMF is V. So V minus V, that is V, divided by net resistance, that is equal to 3R. So current is equal to how much? Current is equal to V by, yeah, 3R, right? Now we have to calculate potential difference across the capacitor. How we can do this? Let's say this point to be A. Let's say this is point A and this is point B. Write KVL in that arm. So I will write here VA plus V minus potential on capacitor equal to VB. So VA minus VB is, or let's say we have to calculate, we are interested in VC. So let's say what is this VC. So VC is equal to how much? This is equal to V plus VA minus VB. Now we need to calculate VA minus VB. That we can do by this thing, because this point is also A, this point is also B. So write KVL here. If you write it, VA plus 2 minus 2R into current, that is V by 3R, and this will give you like this. So this is this 2V by 3, and this is, so this will become VA minus VB is equal to how much? That is minus 4/3 volt. ठीक है. So यहाँ से VC को आप लिख लो V plus how much? Minus 4/3 volt. So this is equal to V by 3. ठीक है. So potential difference across the capacitor will be how much? V by 3. So correct option will be what? It will be T. So this way you can do. Done it? Chalo. Now let's do this question.
Anybody, any thought? Okay, one correct answer. Great. चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं. So what we see here, there are two capacitors, है ना? This one is grounded. Here it is grounded. Then there are three switches: S1, S2, S3. Now it is said with S1 closed, V1 equal to 15 volt and V2 equal to 20 volt. So if you are going to close S1, ठीक है, nothing is going to happen with C2 because it is still same as before. S3 अभी भी open है, S2 open है. So definitely V2 तो 20 volt रहेगा ही रहेगा. Now the question is, will V1 will become 15 volt? That's the question. What do you think? इंडक्शन में तुमने एक चीज पढ़ा होगा, थोड़ी थोड़ी चीजें कहीं से भी यूज कर सकते हो. जैसे इंडक्शन मेथड में हमने क्या पढ़ा था, हमने एक ऐसा कंडक्टर लाया था, पास में एक पॉजिटिव चार्ज अगर लाते हो, यू मस्ट रिमेम्बर दिस, दिस नेगेटिव ऐसे आया था, पॉजिटिव ऐसे आया था, है ना? उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने इसको ऐसे ग्राउंड किया, ठीक है ना? दैट वाज द केस. एक सेकंड, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड. यस. तो हियर व्हाट विल हैपन, एक चीज ध्यान से देखो, ऐसे हमने ग्राउंड किया, व्हाट विल हैपन हियर, क्या होगा बताओ? ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव से बॉन्डेड है, ठीक है, एंड दिस थिंग इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड. सो यहाँ से चार्ज ये जा सकता है अंदर, ठीक है, बट दिस नेगेटिव इज स्ट्रांगली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, सो इट वोंट ट्रेवल. डन है. उसके बाद हमने इसको हटाया था, नेगेटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया. सिमिलरली यू सी हियर, लुक एट द प्लेट, दिस प्लेट T1 का जो कैपेसिटर का जो एक प्लेट है, ऐसे तुम नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो. जैसे C1 का कैपेसिटेंस क्या दिया हुआ है, 2 पिको फैरड. इट्स इनिशियल वोल्टेज V1 इज गिवन है 30 वोल्ट, है ना? सो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज रहा होगा, डन है, और चार्ज कितना जाएगा, 60 समथिंग जाएगा. नाउ इफ यू आर कनेक्टिंग इट टू द ग्राउंड, इस पे जो चार्ज है, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज व्हाट, दैट इज बॉन्डेड बाय द नेगेटिव चार्ज present on the opposite plate, right? So unless the circuit is not complete from the both sides, चार्ज का ट्रेवल नहीं हो पाएगा, जस्ट बिकॉज वन इज गेटिंग कनेक्टेड टू समथिंग. यहाँ पे ये कनेक्टेड है अर्थ से, सो दिस इज अ कंडक्टिंग सिस्टम, इधर से चार्ज ट्रेवल कर सकता है, लेकिन इट वोंट ट्रेवल बिकॉज दिस पॉजिटिव चार्ज इज बॉन्डेड बाय द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट प्लेट, सो इट वोंट ट्रेवल. इसलिए यहाँ पे भी तुम्हारा वोल्टेज क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा, 30 वोल्ट. ठीक है, अभी भी डिफरेंस विल बी सेम. नाउ इफ यू क्लोज S3, क्या है ये, S3 है ना? यस. इफ यू क्लोज S3, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा बताओ? हमने S3 को क्लोज कर दिया, व्हाट विल बी द थिंग, सी हियर, plates will look like this. S3 is closed. Again, this thing is open. Here also this thing is open. इस पे चार्ज समथिंग नेगेटिव है और इस पे चार्ज समथिंग पॉजिटिव. डन है. एंड दिस इज वन आइसोलेटेड सिस्टम. ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है. तो इस पे तुम्हारा क्या है, टोटल चार्ज अगर देखा जाए तो 0 है. फाइनली भी टोटल चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा. एंड पोटेंशियल V1 एंड V2 आर नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड, क्योंकि ये टोटल चार्ज 0 इस तरह से रहेगा सच दैट इस प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज है, इस पे उतना ही नेगेटिव होगा, और इस पे जितना पॉजिटिव है उतना इस पे नेगेटिव होगा. सो दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा क्या जाना है, सेम जाना है. ठीक है, ओके हर्षिता, आई विल एक्सप्लेन. तो I mean total charge of the system will be 0 and it will be 0 in such a way कि जिसपे इतना, इस पे जितना पॉजिटिव है उतना ही यहाँ नेगेटिव होगा, यानी कि पोटेंशियल वापस से सेम रहेगा पहले जैसा, क्योंकि यहाँ तो +60 ही होने वाला है, यानी कि यहाँ भी -60 ही होगा. डन है. सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी 30 वोल्ट, यहाँ भी 20 वोल्ट, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है. हर्षिता विल कम बैक टू दैट पॉइंट. सी, विथ S1 एंड S2 क्लोज्ड, अगर आपने S1 और S2 को कर दिया क्लोज,
ठीक है, अब S1 S2 को आप क्लोज करके देख लो। तो लेट मी क्लोज इट हियर। लेट्स चेक। S1 को क्लोज कर दो, so this plate will get connected to the earth, ठीक है। And then there is another this one, which one is closed? S1 and S2. So this will be open, and again it is here. This is connected to what? This is connected to the ground. अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर S1 और S2 को क्लोज करते हैं तो V1 और V2 इक्वल हो जाने चाहिए 0 के। ऐसा लग सकता है हमें देखने से, क्यों लगेगा? क्योंकि देखो डायरेक्टली ये प्लेट ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए। ये प्लेट ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए। बट ऑल्सो थिंक अबाउट कि इस प्लेट पे हमने क्या चार्ज दे रखा है? इस प्लेट पे हमने नेगेटिव चार्ज दे रखा है। सो इट हैज, अगर सामने के प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है इस प्लेट पे, है ना, और सामने तुम्हारे पास कंडक्टिंग प्लेट है, तो इस कंडक्टिंग प्लेट पे इधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ठीक है। एंड सपोज कर लो ये न्यूट्रल प्लेट है, सपोज कर लो चार्ज इसके सारे अर्थ में चले गए। लेट्स अज्यूम इवन इफ दैट हैपेंस, न्यूट्रल कंडक्टर है ये, राइट, एंड इसके सामने वाले पे नेगेटिव चार्ज है। दिस नेगेटिव चार्ज फील्ड विल अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज हियर, and same amount of negative charge will go opposite side because your plate was neutral, and if now it is connected to earth, ये negative charge अंदर रहेगा। but इधर का plate जो है, जो तुम्हारा the side of plate which is facing another plate having negative charge will have positive charge, right? so you cannot say इन दोनों plates के बीच का potential difference क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। we cannot say this। तो इसलिए S1 एंड S2 को क्लोज भी कर दो तो V1 एंड V2 जीरो नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑपोजिट प्लेट्स हैव चार्जेस एंड दैट चार्ज विल अट्रैक्ट चार्ज फ्रॉम प्लेट प्रेजेंट इन फ्रंट, राइट? सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अच्छा, समझ गए, इसलिए मैंने बोला थोड़ा वेट कर लो। ऑप्शन डी में जाओ, विथ S1 एंड S3 क्लोज। अब हम क्या करने वाले हैं? S1 और S3 को क्लोज करते हैं। तो चलो करके देखते हैं। S1 को क्लोज कर दिया, S3 को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब आप देखो S1 और S3 को अगर आप क्लोज कर रहे हो तो हमें दिख रहा है दो कैपेसिटर है, दोनों सीरीज में, ठीक है। सो दोनों सीरीज में होगा, दोनों पे चार्जेस क्या होने चाहिए? सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन का रूल क्या है? चार्जेस शुड बी सेम। इनिशियली इस पे 60 था, इस पे भी 60 था, चार्जेस सेम थे, तो अभी भी सेम रह जाएगा, ठीक है। सो पोटेंशियल विल रिमेन द सेम। डन है। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी, ठीक है। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ना प्रॉपरली हमें समझना है, तो क्वेश्चन करते करते आवर डाउट विल गेट मोर क्लियर। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सो टेक सम 1.5 मिनट, ठीक है। मैम किसको डाउट या मैम लास्ट क्वेश्चन में अगर हम तीनों स्विचेस क्लोज कर देते तो हो जाता जीरो। सॉरी, मैम अगर लास्ट क्वेश्चन में हम तीनों स्विचेस क्लोज कर दें तो? कौन से स्विचेस? मैम तीनों। तीनों ही स्विच क्लोज कर, ठीक है, देखते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे हमने तीनों को ही क्लोज किया, लेट्स से। तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ इज, इसको भी क्लोज किया, इसको भी क्लोज किया, इसको भी क्लोज किया। सो व्हाट इज द थिंग नाउ? एक चीज देखो यहाँ पे, ये दोनों प्लेट हो गया आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो इस आइसोलेटेड सिस्टम पे हमेशा चार्ज 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियली इस पे था -60 और इस पे तुम्हारा चार्ज क्या है? +60 चार्ज है। तो ओवरऑल इस आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज क्या होना चाहिए? 0। आइसोलेटेड सिस्टम मेरे कहने का मतलब कि ये दोनों प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर देन दैट इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी बैटरी और अर्थ। so दिस इज आइसोलेटेड, 0 होगा। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, दिस वन इज कनेक्टेड टू अर्थ एंड दिस वन इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अर्थ। So in this case, if S1, S2 and S3 all are connected to the ground, I mean, if all switches are closed, then there is possibility that potential difference across all the capacitor will become 0। क्योंकि देखो 0 इसलिए हो सकता है और होगा क्योंकि
यहाँ से यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को ट्रेवल करने के लिए जगह मिल गया, ठीक है। दिस स्विच इज क्लोज, सो दिस पॉजिटिव कैन ट्रेवल टू द नेगेटिव एंड दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। एंड द मोमेंट ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस पे अगर कोई चार्ज नहीं है, तो इस प्लेट का जो लेफ्ट हैंड पोर्शन है, उस पे चार्ज होने का टेंडेंसी, it won't remain like that, right? Then simply it will stay at zero potential, it will also stay at zero potential. Then there may be case v1 equal to v2 equal to 0 if मैम all लाइक इन are केस, connected. मैम लाइक Yes, इन केस इसमें तो हमारी चार्जेस इक्वल आ गई थी दोनों कैपेसिटर पे, लेकिन इफ क्या केस ऐसा होता कि चार्जेस डिफरेंट होती तो जीरो नहीं होता। हाँ, चार्जेस डिफरेंट होते तो जीरो नहीं होता, यस नहीं होता। ऐसे भी देखो, इसको और मैं और तरह से तुम्हें समझा सकती हूँ। अगर तुमने तीनों स्विच को क्लोज किया है ना, एक बार और ध्यान से देखो, इफ यू आर क्लोजिंग ऑल द स्विचेस, तुम एक बार कैपेसिटर को ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, एक सेकेंड वापस जाने दो मुझे। दिस वाज पॉजिटिव, दिस वाज नेगेटिव, राइट? दिस वाज पॉजिटिव, दिस वाज नेगेटिव, दिस वाज पॉजिटिव, दिस वाज नेगेटिव, एंड इफ ऑल आर कनेक्टेड इट इज लाइक दिस, ठीक है। सो एक चीज देखो, ये वाला प्लस जो प्लेट है, दैट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव पोटेंशियल वाला प्लेट, राइट? And this is at high potential, this is at low potential. Charge may travel from here, मैं दूसरे वे में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से ऐसे ट्रेवल कर सकता है सच दैट ये चार्ज तुम्हारे क्या हो जाए, आई मीन यहाँ से हाई से लो चार्ज फ्लो करेगा, एंड यहाँ से अगर चार्ज फ्लो करता है तो इसके पोटेंशियल को वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। और अगर ये सेम प्लस सेम नेगेटिव ये है, देन न्यूट्रलाइजेशन में हैपन। सो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो वही चीज हो रही है, क्योंकि अर्थ से कनेक्ट हुआ, यानी कि दिस गॉट कनेक्टेड लाइक दिस, ठीक है। क्योंकि अगर अगर तुम्हारे पास दो प्लेट हैं, कौन से क्वेश्चन में चली गई हूँ, हाँ, ठीक है, दे आर इन सीरीज, राइट? बट इफ दे आर नॉट कनेक्टेड बाय बैटरी, rather than battery got disconnected and after that you are connecting two capacitors like this, then what will happen? Then they will become in parallel actually, ऐसा ऐसा दिखेगा तुम्हें। that is why they are neutralizing each other। क्योंकि तुमने एक चीज और पढ़ा होगा, एक कैपेसिटर ले लो, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसको एक दूसरे प्लेट से कनेक्ट कर दो, व्हाट विल हैपन? चार्ज विल फ्लो लाइक दिस, ठीक है। और अगर तुमने इसके नेगेटिव, अगर तुमने दो ऐसे कैपेसिटर लिए, एक पे पॉजिटिव था दूसरे पे नेगेटिव था, दूसरा प्लेट भी ऐसा है, इस पे नेगेटिव है इस पे पॉजिटिव है, एंड दोनों पे सेम चार्ज है, एक पे +60 यहाँ है, इस पे -60 यहाँ है, एंड इफ यू आर कनेक्टिंग इट लाइक दैट, चार्ज विल फ्लो सच दैट फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम जीरो। क्योंकि देखो, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, दिस आर आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज इज बिकमिंग जीरो, फाइनली ये न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को। बट इफ चार्जेस आर डिफरेंट, लेट से यहाँ पे +60 है, यहाँ पे -30 है, देन व्हाट विल हैपन? 30 चार्ज विल ट्रेवल फ्रॉम हियर, ठीक है, न्यूट्रलाइज हुआ, अगेन मोर चार्ज विल ट्रेवल, उसके बाद ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा एंड दिस विल गेट नेगेटिव, एंड फाइनली चार्ज विल distribute onto it get distributed onto each other in such a way that potential difference will become same, ठीक है। तो वाइजली तुम्हें प्रोसीड करना होगा, अगर तुमने तीनों को क्लोज किया तो न्यूट्रल हो जाएगा, यस, ठीक है, ओके। कोई डाउट हो यस तो बताना, ठीक है। चलो, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली इजी, सो टेक सम 1 minute and let me
हर सर्किट का आप आर इक्विवेलेंट कल कैलकुलेट करो और हर सर्किट का सी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, सिंपल। ठीक है, देन सिंगल लूप सर्किट हो रहा है ना, सिंगल लूप सर्किट हो रहा है आफ्टर डूइंग आर इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट, देन सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट दैट ओनली एंड टाउ इक्वल टू आर इनटू सी। सिंगल लूप सर्किट ही है ना। देखो ये वाला डायग्राम थोड़ा आसपास दिख रहा है, ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा है, एंड दिस इज थर्ड वन। कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। C1 C2 R1 R2 वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। आई गॉट वन करेक्ट आंसर, थैंक यू। अदर्स प्लीज। क्या, चलो लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ। सो ओके, टू करेक्ट आंसर्स, वेरी गुड। सो इफ यू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट ऑफ फर्स्ट सर्किट में तुम्हें आर इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? बोथ आर इन सीरीज, so R1 plus R2 and that is 3 ohm. What will be C equivalent? They are in parallel, so they will get added like series. C1 C2 4 into 2 वही होगा ना, 4 into 2 is 8. So RC will be equal to how much? टाइम कांस्टेंट, कुछ गलत कर रही हूँ क्या मैं? मैम 4+2 होगा। हाँ वही, कुछ तो उल्टा किया मैंने। हाँ 4 + 2 तो 6 होता है ना, सॉरी 8 कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। टाउ क्या हो जाएगा? 6 into 3 दैट इज योर 18। ठीक है, सेकेंड केस में क्या होगा तुम्हारा? C1 C2 दे आर इन सीरीज, so will get added like parallel and that will become 4 into 2 by 6, so that is equal to 4 by 3. R equivalent will be equal to how much? 2 into 1 by 3, so 2 by 3, and this will become 8 by 9 टाउ। ठीक है, थर्ड सर्किट में आप देखो दोनों ही पैरेलल में है, सो आर इक्विवेलेंट इज 2/3, सी इक्विवेलेंट विल बी हाउ मच? ऐड कर दो, तो 6। ठीक है, एंड दिस विल गिव यू हाउ मच? टाउ इज इक्वल टू 4, सो 18 8/9 4, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट, लेट्स डू इट। यस, व्हाट द आंसर? नो आंसर्स।
see how we'll do it. Let's do it now. So there is a 2 microfarad capacitor and this is charged as shown in the figure. Okay? The percentage of its stored energy dissipated after the switch S is turned to position 2. So initially, switch 1 is closed, and when switch 1 is closed, what will happen? 2 microfarad capacitor will get charged. And how it will get charged? This will retain positive charge, this will retain negative charge. And it will get charged to a potential of V. So what is the initial energy on the capacitor, 2 microfarad capacitor? That is equal to half CV square. I'm not putting the value. So let's say this is half C1V square. Done it? After that, what we are doing after long time, we are disconnecting it. Switch 1, we are disconnecting, and what we are doing, we are connecting switch 2. And the moment you will connect switch 2, this capacitor will get connected to this capacitor. Now what will happen? This is neutral, right? So potential difference exists. It has a positive potential, it has zero potential. So charge will flow from here to here. It has a zero potential and it has negative potential. Charge will flow from here to here, and hence this will gain negative charge and this will gain positive charge. How long this will happen? This thing will happen until both capacitors have same potential difference, right? So let's say initial potential difference agar V tha, let's say final potential difference between these two plates is V dash. Done it? First thing. So potential difference will become same. It means these two capacitors finally are in parallel because across both capacitors, potential difference is same. So they are in parallel. C equivalent का value क्या लिखोगे आप? C1 plus C2. ठीक है? This is sorted. After that, what we need to calculate? Final energy dissipated we have to calculate. So we need to calculate final energy. And for calculating final energy, what we will do? Half C equivalent, that is C1 plus C2 ka V square. V dash square, right? So we need to calculate V dash. How we will calculate V dash? Another thing we will use. जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ? कैपेसिटर से चार्ज ऐसे मूव किया, such that चार्ज इज कंजर्व, क्योंकि चार्ज दोनों ही प्लेट पे रह रहा है, दोनों प्लेट से बाहर नहीं जा रहा चार्ज, दोनों ही कैपेसिटर पे. इट्स नॉट लिविंग दिस सिस्टम, राइट? सो इनिशियली व्हेन this capacitor, when this switch 2 was not connected, or just before connecting switch 2, this battery was having how much charge? CV charge. And this CV charge got distributed in such a way that potential difference between these two capacitors is same. It means final charge that we are having on two plates will be same as CV, right? So finally, if you see it like this has a positive charge, this also has a positive charge, such that sum of positive charge on these two surfaces will be equal to how much? CV. Okay, similarly, sum of negative charge on the bottom plate will be equal to CV with negative sign. And this CV is now equal to how much? Charge on this capacitor is initially I'm calling this C1. So this is C1. So C1V is equal to C1V dash plus C2V dash. Charge का conservation किया मैंने. So V dash, if you calculate, this is C1V by C1 plus C2. अब आप values put कर दो. C1 is 2, so 2V by 10, so V by 5. Final potential is what? V by 5. Final energy आप निकाल लो. So final energy, if you calculate, C1 plus C2 is 10. Into क्या करोगे आप? V dash का square, that is V square by 25. So this will become this is this. So final energy is how much? V square by 5. Initial energy was how much? Initial क्या था बताओ? Half C1 V square. So this is C1 is 2. So this is half into 2 into V का square. So this is equal to V का square. ठीक है? So this will become how much? V का square. Now if you calculate change in energy is how much? V square minus V square by 5. So that is 4V square by 5. This much energy got dissipated in the form of heat in the wire. Okay. Now what is the percentage of dissipated energy? 4V square by 5 divided by initial energy CV square into 100. If you solve it, this is 400 by 5. So this is 80%.
ठीक है, so correct answer will be what? B. तो दिस इज हाउ वी डू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग. अगर तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक का पॉजिटिव प्लेट ऐसा था, इट वाज चार्ज्ड विथ सम वोल्टेज. ठीक है, लेट्स से वी नॉट वोल्टेज से चार्ज्ड है, इट्स कैपेसिटेंस इज सी नॉट, and there is another capacitor which is again it has a negative charge here and it has a positive charge here. ठीक है, and its capacitance is, let's say, C1. It is charged to voltage V1, and now what we are doing, we are connecting these two. And if we are doing so, concept will remain same. Finally, potential difference across both will be same. कितना होगा? That will be I mean, let's say it is V dash. So potential difference will become same. These two capacitors will become in parallel. So C equivalent will be C1 plus C naught. एंड फाइनली चार्ज कॉन्जर्वेशन कैसे करोगे, उसमें थोड़ा सा केयरफुल होना है यहाँ पे, बिकॉज हियर पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट. सो टोटल इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम क्या होगा? इनिशियली इस पे कितना चार्ज है? सी नॉट वी नॉट. और इनिशियली इस पे कितना चार्ज है? सी वन वी वन. सो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज दिस. ठीक है, इनिशियल चार्ज, जैसे मैंने यहाँ पे इनिशियल चार्ज लिया C1 भी, यहाँ पे तो सिंगल था, क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल. बट इफ सच केसेस आर देयर, देन इनिशियल चार्ज ऑफ द सिस्टम आप ऐसे लिखोगे. अगर यहाँ पे ये भी पॉजिटिव होता तो इनिशियल चार्ज होता C नॉट V नॉट प्लस C1 V1, and this will be equal to final charge on both the plates, which will be equal to C1 plus C naught into V dash. So from here you can calculate V dash and you can do the things. Done? Clear है? Yes, ma'am. Okay. Chalo, let's do this question now. हम ऐसे ही जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा? लाइक चार्जेस तो सेम रहेंगी, पोटेंशियल किस तरीके से किस डिवाइड केस होगा? में? हम लाइक लास्ट केस में, लाइक हम लोग वैसे क्वेश्चन हमने सारे पैरेलल वाले ही किए थे, लेकिन इन जनरल अगर कभी सीरीज में ऐड करें कोई चार्ज कैपेसिटर को किसी नॉन चार्ज कैपेसिटर से, तो क्या डिफरेंस आएगा? लाइक पोटेंशियल डिवाइड सिमिलरली, अगर लाइक तुम्हें हाफ हाफ देखो, डिवाइड हो जाएगा. दिखने में लगेगा सीरीज जैसा है, जैसे तुम कह रहे हो ऐसा अगर हो जाए, एक प्लेट ऐसा पॉजिटिव था, नेगेटिव था, उसको हमने कनेक्ट कर दिया दूसरे के पॉजिटिव से एंड इसके नेगेटिव से, ऐसा ऐसा बोल रहे हो ना? यस मैम. दिस दिस इज ऑल्सो इन पैरेलल. यहाँ से चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए. आई मीन इसके देखो, इसके यहाँ का पॉइंट 1 ले लो, दिस पॉइंट 2 ले लो. सो दिस इज, इफ दिस इज पॉइंट 1, देन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल दिस इज ऑल्सो पॉइंट 1, राइट? सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज सेम अल्टीमेटली. यस मैम. हाँ, तो पैरेलल में ही. टेक योर टाइम, डू इट.
Yeah, somebody texted me. Sorry, Sohel. Yeah, that's correct. Sorry, yaar. Sorry, I consumed your time. Actually, I got one call. It had to be answered, so I did. Sorry. Chalo. So, what is the question? Question is not that difficult. First, let me tell you. There is just you need to imagine things. So, there is a parallel plate capacitor having plates of area S and plate separation D. So, there is two plates like this. Area of this is S. Separation between this is D. So, if you calculate what else are given? Let's check first. Has capacitance C1 in air, and this has a capacitance C1 in air. So C1 is equal to epsilon naught S by D, right? When two dielectrics of different relative permittivities are introduced between two plates, as shown in the figure, the capacitance becomes C2. The ratio C2 by C1 is what? Okay. So what you will be getting here, let me show you. See here, पहले तो ऐसा plate था. Now what we are doing in this space there is a dielectric of dielectric constant epsilon 2. ठीक है? And in this space there is epsilon 1. In this space there is epsilon 1. Done it? Now how many capacitors we are getting? अगर इसको आप ध्यान से देखो तो then this is one capacitor. Let's call it let's call it क्या बोलूं CX बुला लो ठीक है and then this is another capacitor. Let's tell it CY. This CX and CY, they are in series because CX one plate is this and CX another plate, imaginary plate we will keep here. This is another one and CY has one plate this, another plate this. Potential difference clearly is different between these two things, these two capacitors, right? So they are in series. And after that, CZ is in parallel with CX and CY. Why? Because let's say this plate has a potential of V1, this plate has a potential of V2, and this middle region has a potential of V3. So clearly, Y is V3 minus V2. ठीक है एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट सी जेड का एक प्लेट ये है सो इट विल हैव पोटेंशियल V1 सेम एज दिस बिकॉज दिस part of the plate is continuity of the upper portion. If you now see things here, this is in parallel with these two. So यहाँ पे आप लिख डाल this has a potential of V1 minus V2. It's like that. अब आप CX का वैल्यू लिखो. CX का वैल्यू क्या है बताओ? That is epsilon naught. एरिया कितना है? S by 2. डिस्टेंस कितना है? D by 2. Permittivity क्या है इस मीडिया का? That is your epsilon 1, right? So this is 2. This will get cancelled. Epsilon naught S by D into 2. That is 2C1. And what is this CY? CY क्या है बताओ? CY क्या लिखूं मैं? CY is epsilon naught again it's by 2 D by 2 into divided into what? Epsilon 2 that is 4. So this is 4 C1 ठीक है and what will be CZ? That is epsilon naught. Area तो S by 2 है. Separation between plate is D here. So this is D into 4. So this is again 2C1. मैम 2 आएगा 2 आया ना मैम 4 की जगह 2 मल्टीप्लाई होगा वो एप्सिलॉन 1 वाला मीडियम है अच्छा 2 है वो हाँ थैंक यू सो दिस विल गेट कैंसिल्ड C1 ही आएगा सो दिस इज C1 एंड what is this values? This is 2C1 and this is 4C1. हम CX 2C1 वाले में भी 4 मल्टीप्लाई होगा ना उसमें भी CX में 4 कैसे होगा? इस मैम पूरे E2 स्पेस ना में उधर ये पूरे स्पेस में एप्सिलॉन 1 है. अच्छा पूरे यस मैम वो मिस्टेक हो गई मुझे भी पहले यही दिखा था. अगर आप सॉल्व करो दिस इज 2C1 4C1 into 2C1 divided by 6C1 so this is 4 by 3C1 plus C1 पैरेलल में है प्लस कर दोगे so this is 7 by 3C1 so रेशियो क्या हो जाएगा 7 by 3 करेक्ट ऑप्शन विल बी D.
सिंपल है, डिवाइड करना था सिंपली, कैपेसिटर्स को देखना था सीरीज में है कि पैरेलल। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. This one is taken from H.C. Verma, I guess. Such sort of question is there. It came in 2008 also. आप करो, चेक करो, ठीक है. ओके, एनी आंसर? चलो मैं ना पोल लॉन्च कर देती हूँ, आराम से करो, कोई चाप नहीं है. लेट्स चेक नाउ कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. ध्यान से देखो क्या कह रहा है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी, ठीक है, with plates of unit area is given, its value is 1, and separation D is filled with a liquid of dielectric constant K equal to 2. The level of liquid is D by 3 initially. Suppose the liquid level decreases at a constant speed V. The time constant as a function of time T is what? सबसे पहले तो this is RC circuit. So time constant का value क्या होगा? R into C. ठीक है. So we have to calculate value of C as a function of time. Simple. अब आप ध्यान से देखो, सपोज कर लो कोई भी टी टाइम पे लेवल के लिक्विड जो है वो कितनी है. सपोज कर लो ये थिकनेस तुम्हारा, that we need to calculate, right? So initially it is d by 3. Initially it is how much? D by 3, and it is decreasing at a constant speed v. So अगर ये constant speed v से नीचे चल रहा है, ये liquid decrease कर रहा है, means it's going down with a speed v. So in time t, how much distance it will cover? Vt. Done है. So in time t, it will get decreased by vt distance. So new width of this will become how much? D by 3 minus vt. So this will become d by 3 minus vt. And what will be this separation? Initially this separation is how much? D minus d by 3, that is 2d by 3. And the level that liquid has left will get filled by air.
So here there will be increment of Vt. Done it. So this distance will now become 2d by 3 plus Vt. सिंपल है, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तुम्हारे पास दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है विदाउट लिक्विड, अनदर इज विथ लिक्विड, एंड दे आर इन सीरीज और पैरेलल। सीरीज में दिख रहा है ना, क्योंकि वन इमेजिनरी प्लेट विल बी हियर एट द पॉइंट वेयर लिक्विड लेयर इज। ठीक है, सो दिस टू आर इन सीरीज। C1 का वैल्यू निकालो। लेट्स से दिस इज C1, लेट्स से दिस इज C2। So C1 का वैल्यू क्या होगा बताओ? That will be epsilon naught A, that is 1 by distance, that is 2d by 3 plus Vt. So this is equal to epsilon 3 epsilon naught by 2d plus 3 Vt. Correct है? What will be C2? It will be epsilon naught, area तो same है A, so 1 d by 3 minus Vt. So this will become how much? 3 epsilon naught, क्या है, 3 epsilon naught by d minus 3 Vt। ठीक है, अब आप क्या करो, C इक्विवेलेंट निकालो। C इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 by C equivalent will be 1 by C1 plus 1 by C2. So 1 by C1 is how much? That is equal to 2d plus 3 Vt. Will be this one divided by डायलेक्ट्रिक। C2 में तुम्हारा क्या जाएगा? C2 will have certain, am I audible? यस मैम। ओके, C2 का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 दिया है ना, वो मैंने लिखा ही नहीं। सो यहाँ पे 2 जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। इफ यू विल सॉल्व इट, लेट्स मेक द डिनोमिनेटर सेम। अगर मैं सेम करूं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ भी, एंड दिस विल बिकम हाउ मच? 4d प्लस d plus 6Vt minus 3Vt, so that will become 3Vt divided by this is 6 epsilon naught, yes, 6 epsilon. So this is equal to 5d plus 3Vt by 6 epsilon. This is 1 by C equivalent. So C equivalent will be equal to how much? 6 epsilon naught, और 3 था ना, मैंने 6 क्यों लिखा? That is okay, that is 6 actually. 5d by 5d plus 3Vt and into r कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? Time constant. So 6 epsilon naught r, yes, this will be the answer. ठीक है, सेम इसी कॉन्सेप्ट से एक और क्वेश्चन आया है तुम्हारा 2019 या 20 में। आई हैव इंक्लूडेड दैट क्वेश्चन। यस, मैम मैम इसमें एक फॉर्मूला होता है, जब एप्सिलॉन बाई टी डी माइनस टी प्लस टी बाई के वाला। हाँ, तो उससे मैं कर रहा था, मुझसे आंसर नहीं आ रहा। कौन सा फॉर्मूला? मैम एक होता नहीं है टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक, अगर बीच में रखा हो, देन सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यार फॉर्मूला मैं ऐसे याद रखती नहीं एक्चुअली, सो आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मे बी तुमने अगर फॉर्मूला पढ़ा है और नहीं हो रहा तो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक का थिकनेस स्टेबल नहीं है, दैट इज चेंजिंग हियर, मे बी बिकॉज तो ऑफ मैम दैट यू आर नॉट गेटिंग। हाँ मैम, उस फॉर्मूले में मैंने मतलब थिकनेस की जगह वेट ही रख के डायरेक्ट सॉल्व कर तो रहा हूँ, लेकिन नहीं आ रहे। तो वो फॉर्मूला यूनिवर्सल नहीं होगा, मुझे भेजना एक बार तुम। मैम उस क्या है? फॉर्मूले से मेरा सी आंसर आएगा। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? कोई भेज सकता है मुझे चैट सेक्शन में भी? फोटो लेकर भेज दो अगर बनाए हो। देखो मैम आप लिखिए, हम फॉर्मूला, बता रहे हैं। हाँ बताओ, बोलो मैं लिखूंगी। एप्सिलॉन नॉट हाँ, एप्सिलॉन नॉट ए एरिया इनटू के, अपॉन डेनोमिनेटर में यस,
डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ऐसा? टी बाई के, टी अपॉन में के। मैंने सही लिखा ना, डी माइनस टी प्लस डी बाई के। और ऊपर वाला के नहीं आएगा मैम, जो न्यूमरेटर में लिखा है आपने हाँ वो हाँ। नहीं आएगा। अच्छा, तो क्या लिखना है मुझे? डी माइनस टी माइनस। मैम प्लस में टी मैम बाई आई के हैव सेंट यू मैम ऑन व्हाट्सएप। ऊपर वाले में के नहीं आएगा। अच्छा, ऊपर वाले में के नहीं आएगा, ये कह रहे हो? ये हटा दो। मैंने और व्हाट्सएप पे यहाँ? भी भेज दिया है अच्छा, व्हाट्सएप पे विद भेजा। प्रूफ। यस मैम। थैंक यू वर्षिता। ओके, मुझे मैसेज क्यों नहीं आया? सेंड है क्या? तुम्हें दिखा रहा है? यस मैम। तुमने मुझे ही भेजा ना? मैम आपका नेट ऑफ है। नहीं, नेटवर्क तो है। मुझे तो नहीं आया। मैम रीसेंड करती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे चैट सेक्शन में जा रही हूँ, वहां भी नहीं दिख रहा मुझे। एनीवे, तुम लोग मुझे सेंड कर दो, मैं देखूंगी और तुम्हें बताती हूँ। मैम ग्रुप पे भेजा है, शोर है। हाँ, ग्रुप पे तो दिख रहा है मुझे। ओके, डी माइनस टी प्लस टी बाई के किया तुमने। अरे, ये फॉर्मूला तो हम तब लिखते हैं ना जब तुम्हारा मतलब टी थिकनेस का तुम्हारे पास डायलेक्ट्रिक है, बीच में कहीं भी रखो, सी का वैल्यू हमेशा ये आता है जो तुमने फॉर्मूला में लिखा है। तो तुमने क्या सॉल्व कर दिया यहाँ यहाँ पे? पे वेरिएबल कहाँ लिया तुमने? टी तो यहाँ पे, टी को क्या लिख दिया? डी माइनस। कैसे निकाले निकाले हो? हो। सेम क्वेश्चन को किया है क्या हर्षिता, या फिर फॉर्मूला है ये? मैम ये फॉर्मूला यूज होता है इन जनरल ज्यादातर क्वेश्चंस में। बट यू कैन नॉट यूज सच फॉर्मूलाज डायरेक्टली ना। अगर तुम्हें यहाँ पे, तो तुम्हारा टी थिकनेस जो है वो वेरिएबल है, तो तुमने वेरिएबल रख के बनाया होगा, है ना? लेकिन शायद तुम लोग डी को चेंज नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो मतलब? देखो, ये फॉर्मूला इसलिए यहाँ पे ट्रू नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा टी थिकनेस तो घट रहा है, साथ साथ में वो वाला स्पेस भी बढ़ रहा है, जो ब्लैंक स्पेस है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, राइट? तो तुमने एक इफेक्ट को इंक्लूड किया होगा टी में, दूसरा इफेक्ट इंक्लूड नहीं हो रहा। समझ रहे हो? मैम आ गया, मेरा जैसे करेक्ट आंसर आ गया उसी फॉर्मूले से। कैसे कैसे आया? आया मुझे मुझे भेज भेज देना देना एक बार एक बार डायग्राम। डायग्राम। मैम मैंने सब्ट्रैक्शन में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। अच्छा, बट आई सजेस्ट ज्यादा फॉर्मूला ऐसे यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो सकता है। बट फिर भी मुझे एक बार भेजना तुम। दिस थिंग इज क्लियर, बट एनीवे, आ रहा है तो ठीक है, बट कॉन्सेप्चुअली शुड बी क्लियर। चलो, लेट्स नाउ डू दिस क्वेश्चन। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फास्ट। I will be giving you 1 minute for this question. You can do it in 1 minute. So do
गॉट इट एवरीवन? चलो ठीक है, ट्राई करते हैं साथ में। क्या है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? देयर इज ए कैपेसिटर प्लेट, ठीक है, एंड इट इज लाइक दिस, देयर इज अनदर प्लेट हियर एंड देन देयर इज अनदर प्लेट हियर। चलो मैं ऐसे ही रखती हूँ अभी इसको, यू कैन कंबाइन इट, it is combined actually. So what we are doing is we are giving this plate plus 80 microcoulomb. So according to law of capacitor, blindly ऐसे देखो, इस पे नेगेटिव चार्ज जाएगा, कितना जाएगा? -80 अट्रैक्ट हो रहा है, राइट, -80। अगर इधर -80 अट्रैक्ट हुआ है, जैसे मैंने प्रीवियस में भी बताया, तो इधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल बेसिकली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू, या फिर ऐसे प्लेन में ऐसे समझो, +80 था, इसके पास कितना चार्ज आ गया? -80 आ गया, ठीक है, ऑपोजिट प्लेट पे। एंड नाउ इफ यू लुक एट दिस प्लेट्स क्लोजली, इस प्लेट को और इस प्लेट को और इसको, इन तीनों प्लेट्स को तुम क्लोजली देखो, ये ऐसे है, ऐसे है ना? These three plates are connected to nothing. I mean, neither it is given any external additional charge, nor it is connected to earth. So this is isolated system of plates. And if plates are isolated, net charge on it will be what? Initially it's zero, so finally it should be also zero. अब देखो, the moment we kept 80 coulomb on the upper plate of 4 microfarad capacitor, -80 coulomb is appearing here. It means +80 coulomb will be on these two plates. समझ रहे हो? इस पे गया कितना? -80। तो इस पे जो भी Q1 चार्ज ले लो, यहाँ पे Q2 ले लो, Q1 plus Q2 should be equal to 80, then 80 minus 80 will become what? 0, क्योंकि फाइनली हमें जीरो ही रखना है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इनिशियल जीरो फाइनल जीरो। तो दिस इज दिस। अब देखो Q1 plus Q2 80 माइक्रोकूलम है, चार्ज को डिवाइड कर दो, इन दोनों पे चार्ज कैसे डिवाइड होगा? अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, राइट। एंड Q को आप कैसे लिखते हो बताओ? Q इक्वल टू CV लिखते हो, so Q is directly proportional to capacity, and here if you write things, Q1 by Q2 will be equal to how much? That is 2/3. So we have to calculate what? Q2, right? So Q1 plus Q2 80 है, यहाँ से Q1 का वैल्यू लिख डालो आप। Q1 क्या हो जाएगा? 2/3 Q2 plus Q2 is equal to 80, and this is 5 Q2 by 3 equal to 80. So Q2 is equal to 48 microcoulomb. ठीक है? So on the upper plate there will be positive charge. ठीक है? And option, correct option will be C. Yes. ठीक है? सो आइसोलेटेड सिस्टम को बहुत ज्यादा दिमाग में रखना है while solving capacitors, ये काफी हेल्पफुल होता है। डन है? चलो, नाउ डू दिस एंड लेट मी नो योर आंसर्स फास्ट। इसमें भी तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एंड डू, टेक योर टाइम। Okay, I got one answer there, but अच्छा ये पहले का फोन, सॉरी, लेट मी एंड इट। चलो तुम लोग मुझे ऑप्शन सजेस्ट भी कर सकते हो, जैसे जैसे हो रहा है, यू कैन राइट इन द चैट सेक्शन ऑल्सो। सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है जो अभी तक हमने यूज किया बहुत ज्यादा, चार्ज डिवीजन एंड ऑल।
चलो डिस्कस करते हैं भी। आई होप कुछ लोगों का कुछ तो ऑप्शन सजेस्ट करो, एनीबडी, इफ यू हैव गॉट एनीथिंग। दिस इज मल्टीपल चॉइस, सो you have to opt for more than one option. Yes, anybody, anything? हिमांशु, नहीं करेक्ट तो नहीं लग रहा। चलो एक काम करते हैं, स्लोली डिस्कस करते हैं इसको। क्या है देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा। सो सबसे पहले S1 को क्लोज किया। जैसे ही हम S1 को क्लोज करेंगे, S1 को आपने क्लोज किया तो हमारा सर्किट कैसा बनेगा? सर्किट विल लुक लाइक दिस, राइट? It will look like this. Complete circuit. It is this, right? So this is 2 V naught and this is positive terminal. It will get positive charge. It will get negative charge. How much charge? You will write here 2 C V naught. This much charge. ठीक है? Second case में हम क्या कर रहे हैं? Now the switch S2 is then pressed to charge the capacitor C2. अब हमने क्या किया और C1 को डिस्कनेक्ट किया या नहीं किया? एंड देन रिलीज। ओके, C1 को फुल्ली चार्ज करने के बाद S1 को रिलीज कर दिया गया, यानी कि ये ओपन हो गया और ये हो गया क्लोज। अगर इसको क्लोज करोगे, S2 को जैसे ही हमने प्रेस किया, सर्किट कैसा बनेगा? C1 प्लेट, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव था, एंड देन हियर देयर इज C2 कैपेसिटर, न्यूट्रल C2 कैपेसिटर। अब यहाँ पे तुम्हें सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। Charge will get transferred until both will be in parallel. And since here both capacitors are of same capacitance, equal amount of charge will get divided finally on each other, on both of them, right? So यहाँ से अगर आप लिखोगे, इस पे टोटल चार्ज कितना था? 2 CV naught, and this will equally now get divided on 2 plates. So यहाँ पे सिर्फ CV naught बचेगा और यहाँ भी CV naught. Done it? Now what we are doing, after some time S2 is released. अब हमने S2 को भी रिलीज कर दिया and S3 is pressed. तो क्या होगा? अब देखो, अब हमारा S3 को प्रेस करने के बाद सर्किट क्या बचेगा? ओके, इट फेल्ट लाइक समथिंग हैपेंड, नथिंग, ठीक है, चलो। सो दिस इज कैपेसिटर, दिस इज दिस। अब आप इसको क्या करना है, बैटरी से कनेक्ट हो गया एंड दिस बैटरी इज लाइक दिस। अब आप सोचो क्या होगा, इस पे क्या चार्ज था? सॉरी, what was the charge? Plus दोनों, this was plus and this was negative. Now what will happen? अब देखो ये बैटरी है, तो बैटरी क्या करता है? सप्लाई करेगा चार्ज को, इधर से नेगेटिव चार्ज जाएगा और इधर से जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये तब तक चार्ज को सप्लाई करेगा इस सेंस में जब तक इस पे जीरो ना हो जाए चार्ज। क्योंकि देखो, अगर तुमने कोई भी कैपेसिटर को ऐसे बैटरी से कनेक्ट किया है तो फाइनल रिजल्ट तो हमें पता है कि इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज वही होगा जो बैटरी का वोल्टेज है। सो हियर बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस इज V, हियर आल्सो इट विल बी V. दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, हियर देयर विल बी नेगेटिव चार्ज. दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, हियर देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज. हाउ मच? CV नॉट. ठीक है, सो इनिशियली तो पहले ये न्यूट्रल होगा, इस पे चार्ज नेगेटिव आकर एक्यूमुलेट करेगा, ये इस पे चार्ज घटता जाएगा. सो first it will become neutral and then after long time what will happen, this plate will have negative charge of minus CV naught and this will have positive charge of minus CV naught. Now let's answer the thing. The charge on the upper plate of C1 is 2 CV naught. Finally upper plate of C1 पे कितना चार्ज बचा है? C1 ये था ना, ये इससे जब कनेक्ट हुआ था तो इस पे तो CV नॉट ही बचा था ना। डन है, सो फाइनली इस पे CV नॉट, यस यस बोलो। तो ये ठीक है, चलो। सो फाइनली C1 पे कितना चार्ज बचा है? CV नॉट बचा है, नॉट 2 CV नॉट, so this is CV नॉट. This statement is wrong. Charge on the upper plate of C1 is CV naught. Yes, that's correct. The charge on the upper plate of C2 is 0. नहीं, 0 कुछ देर के लिए होगा, but ultimately this is going to be the case. The charge on the upper plate of C2 is minus CV naught. Yes. Done. So correct option कौन कौन सा होगा? B और D. Everyone got it? ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट इज वेरी वाइड एंड रैम्पेंट. आई मीन इट्स एवरीवेयर. So you should know how to distribute things.
सीरीज पैरेलल कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये मैंने बहुत क्वेश्चंस इस पे इंक्लूड किए हैं। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। दिस वन आई इंक्लूडेड क्योंकि अगर हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है वेयर देयर आर मोर देन वन रजिस्टर लाइक दिस, नॉट क्लियरली इन सीरीज और समथिंग, तो कैसे सॉल्व करेंगे। टाइम क्या हुआ है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को तो तुम लोग कर लोगे, बहुत इजी है, तो यू विल फॉलो इट फर्स्ट। एक काम करते हैं, पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, प्लेट के डिस्ट्रीब्यूशन को फिर से पढ़ते हैं, इसको करते हैं थोड़ा, ठीक है, लास्ट में उसमें जाएंगे। लेट्स डू इट फर्स्ट। एक और क्वेश्चन है प्लेट का, सो आई जस्ट वांट टू गेट दिस डन बिफोर। ये तुम्हारा मैच द कॉलम है, एक बार यू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन आई विल टेक यू टू द ऑप्शंस। यस, रीड इट फर्स्ट। क्वेश्चन समझ रहे हो ना, यहाँ पे चार प्लेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लो तुम लोग, चार प्लेट्स है एंड दे आर कीप पैरेलल टू ईच अदर, डिस्टेंस डी है उनके बीच का, डन है, एंड डी इज फार फार लेस देन ए, कहने का मतलब आइडियल कैपेसिटर मान सकते हैं, एंड सी नॉट का वैल्यू गिवन है एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी। ए स्क्वायर इज व्हाट, इट इज द एरिया ऑफ प्लेट, सो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज सी नॉट, दैट वी नो, ठीक है। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। पहले देखो, पहला पी ऑप्शन को हम ध्यान से पढ़ते हैं, वी विल डू इट टुगेदर। तो पी ऑप्शन को आप देखो, कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड, ठीक है। सो S2 and S3 are not connected, which is S2 and S3, let's name it S1, S2, S3, S4. We are asked equivalent capacitance between S1 and S4, सो जिसके क्रॉस भी इक्विवेलेंट निकालना होता है, इसके क्रॉस हम सिंपल बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं, तो सी विच थिंग इज इन सीरीज और पैरेलल, इसलिए मैंने रैंडम बैटरी लगा दिया, ठीक है। एंड इट इज गिवन दैट S2 and S3 आर नॉट कनेक्टेड, सो वी डोंट नीड टू कनेक्ट S2 and S3, इट्स सिंपल लाइक दिस। अब बताओ इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, क्या कहते हैं। C/3। T by 3। 3 होगा, डन है, यही होना चाहिए। तो पी का तुम्हें क्या ऑप्शन लग रहा है, 3 लग रहा है। क्यों C/3 हुआ, क्योंकि ये एक प्लेट है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसका भी C है, एंड दे ऑल आर इन सीरीज, सो दे विल गेट एडेड लाइक पैरेलल, सो C0/3। चलो फर्स्ट केस तो हमारा क्लियर है, दूसरे केस में चलते हैं। दूसरा ऑप्शन, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 and S4 with S2 sorted to S3, S2 is sorted to S3। Now let's check। एक काम करो, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, S2 और S3 को सॉर्ट करने वाली हूँ, तो मैंने कर दिया इसको सॉर्ट। सॉर्ट करने का मतलब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दो। नाउ व्हाट हैपेंड इज, ये दोनों कैपेसिटर अब नहीं हो सकते, व्हाई, बिकॉज इट हैज अ पोटेंशियल V, इट आल्सो हैज अ पोटेंशियल V, बोथ आर सॉर्टेड, इट मींस देयर पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, ठीक है, नहीं हो सकता, डन है।
अब आप ध्यान से देखो कौन से कैपेसिटर हमारे पास बचे, एक ये बचा और दूसरा ये बचा। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ पे बैटरी मैंने लगाया था, लेट्स से इसका पोटेंशियल V प्लस है, इसका V माइनस। इसका पोटेंशियल मैंने V प्लस लिया है, इसका V माइनस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज V प्लस माइनस V एंड दिस इज V माइनस V माइनस, राइट? सो पोटेंशियल डिफरेंस सेम लग रहा है या डिफरेंट लग रहा है? डिफरेंट मैम। डिफरेंट है। सो अगर ये डिफरेंट है तो दे आर इन सीरीज अगेन, राइट? तो अगर ये सीरीज में है तो कैसे जोड़ोगे बताओ? इट विल बिकम व्हाट इफ दे आर इन सीरीज? दिस इज सी नॉट, दिस इज सी नॉट, तो सी नॉट बाई 2। 2। तो ऑप्शन क्यू का क्या होना चाहिए बताओ? सी नॉट बाई 2 इज 2, दिस इज 2। अब चलते हैं थर्ड में, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3 विथ S2 सॉर्टेड टू S4। सबसे पहले तो हमें कैपेसिटेंस S1 एंड S3 के बीच में निकालना है। सो एक काम करती हूँ, डायग्राम को कैसे बनाऊं, S1 और S3 है ना, तो एक काम करते हैं, अगेन मैं डायग्राम अलग बनाती हूँ। लेट्स से दिस इज 1 2 3 4। तो S1 इज दिस, S3 इज दिस, इन दोनों के बीच में निकालना है, तो इन दोनों के बीच से बैटरी को पहले कनेक्ट कर दो। ठीक है, सो आई कनेक्टेड इट लाइक दिस एंड S2 इज सॉर्टेड टू S4। अब आप एक काम करो, S2 को सॉर्ट कर दो S4 के साथ। तो दिस इज S2, दिस इज S4 सॉर्टेड। अगर सॉर्ट करोगे मतलब दोनों का पोटेंशियल हमने कर दिया सेम। अब क्या होगा बताओ, क्या जाना चाहिए? सोचो, सोचो, मैं भी सोच रही हूँ। हाउ मैम मेनी पॉइंट कैपेसिटर्स वी आर गेटिंग? मैम 3 पॉइंट्स मान लेंगे तो उसमें से डायग्राम बना लेंगे सही से और फिर कर देंगे। हाँ, सो S2 और S4 सॉर्टेड है, लेट्स से S2 का पोटेंशियल V है, तो S4 का भी पोटेंशियल V होगा। सिमिलरली बैटरी का यहाँ V प्लस ले लो, ये V माइनस, सो दिस इज V प्लस एंड दिस इज V माइनस। अब आप ध्यान से देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या है, यहाँ पे है V प्लस माइनस V, V माइनस V माइनस एंड दिस इज V माइनस V। दो प्लेट्स तुम्हें पैरेलल में दिख रहे हैं? किसको किसको दिख रहा है दो प्लेट पैरेलल में? जैसे देखो मैंने बोला S1 और S2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, V प्लस माइनस V, सेम। अब आप यहाँ पे आ जाओ, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V माइनस V माइनस। ठीक है, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? हाई को लो से माइनस करोगे, क्या है? V माइनस V माइनस, सेम है ना? सो यहाँ पे प्लेट S2 एंड S3 फॉर्मिंग वन कैपेसिटर, S3 S4 फॉर्मिंग अनदर कैपेसिटर, दिस टू आर इन पैरेलल। तो अगर ये वाला केस कुछ ऐसा है, हमारे पास दो कैपेसिटर आया पैरेलल में, ठीक है, एंड देन दिस टू पैरेलल्स आर इन सीरीज विद दिस, इज इट लाइक दिस? यस, आप सॉल्व कर दो इसको। This is C naught, this is C naught. So C naught, C naught, 2 C naught, and then C naught in parallel series. So 2 C naught into C naught by 3 C naught, and this is equal to 2 by 3 C naught. So answer should be 2 by 3 है क्या? हाँ, फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, R will be 4। अब आप लास्ट को करो, the capacitance between S1 and S2 with S3 sorted to S1। चलो पहले ड्रॉ करते हैं। I should have taken another page, मैं यहीं पे बनाती हूँ इसको। तो एक काम करो, 1 2 3 4, S1 S2 S3 S4। What is the case? Two capacitance between S1 and S2। तो मैंने कनेक्ट कर दिया S1 और S2 को बैटरी से सबसे पहले, with S3 sorted to S1। So this S3 is sorted to S1, done it, and S2 sorted to S4, and this is sorted to let, I mean ये ऐसे पास कर रहा है इसको विदाउट टच किए हुए ऐसा। ठीक है, अब आप पोटेंशियल डिफाइन कर लो। देखो क्लियरली दिख रहा है तीनों पैरेलल में जा रहा है,
कैसे? यहाँ पे इस प्लेट का पोटेंशियल V प्लस ले लो, इसका V माइनस ले लो, तो ये वाला प्लेट इससे कनेक्टेड है, ये हो गया V प्लस और ये हो गया V माइनस। हर दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिख रहा है? V plus minus V minus. All are in parallel. So if all are in parallel, capacitance should become what? It should become 3C naught, which is 1. Option क्या आ रहा है? टी Yes, मैम। yeah, that's correct. ठीक है, यही आंसर होगा। सो सॉर्ट करके ऐसे ऐसे बनाते हैं, ठीक है, सही से तुम लोग कर लेना इसको। और ये चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा आरसी सर्किट वाला है वो तुम लोग करके लाओगे कल की क्लास में, पहले उसी को देखूंगी। इसको करते हैं लेकिन पहले, चलो ज्यादा नहीं लूंगी, 2-3 मिनट लूंगी, ठीक है, आफ्टर दैट आई विल लीव द क्लास। या मैं करा दूं? ठीक है, चलो ठीक है, मैं समझाती हूँ फिर। मैं काम करती हूँ, मैं समझा देती हूँ। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वी हैव अ स्लैब 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और इन दो स्लैब्स के बीच में जो ये स्पेस है, ये स्पेस दिख रहा है ना, दिस स्पेस इज पार्टली फिल्ड विथ एयर एंड पार्टली फिल्ड विथ समथिंग लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, राइट? सो कहाँ तक फील्ड है? देखो यहाँ तक लिक्विड से फिल्ड था, और ये स्पेस तुम्हारा यहाँ तक क्या है? एयर है, ठीक है। कंटेनर इज बीइंग फिल्ड विथ लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक दिस एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ दिस। सो इनिशियली ये फिल्ड ही नहीं है, ये लेवल 0 था, बट इट इज गेटिंग फिल्ड विथ लिक्विड एट द रेट 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम दिया है, लिक्विड का कितना वॉल्यूम जा रहा है। So what is the volume of capacitance of the capacitor after 10 seconds? 10 seconds के बाद capacitance क्या होगा? So you just need to see कि 10 seconds के बाद ये liquid का layer क्या होगा. Let's say liquid layer is this much after 10 seconds. So let's say this is X. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है we are having now two capacitors. एक कैपेसिटर तुम्हारा कैसे दिख रहा है? ये वाला एरिया पूरा है ना, बैक साइड से भी ऐसे, ये पूरा having dialectic of dielectric constant 3 in between its spaces, and then another capacitor is this one, this area, ये बड़ा वाला, which is what? Which is filled with air, and these two capacitors are in series or parallel. अच्छा ये चीज मुझे बताओ, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में होंगे या पैरेलल में? मैम पैरेलल में। पैरेलल में होंगे क्योंकि हाँ, दोनों ही कैपेसिटर सेम प्लेट का पार्ट है, तो सेम पोटेंशियल पैरेलल में होगा। अब देखो हमें ये एक्स निकालना ही टास्क है। आप देखो कैसे फील कर रहे हैं हम, 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप सोचो कि इन 1 सेकेंड इफ यू आर फीलिंग दिस मच, इट मीन्स हाउ मच हाइट इट इज कंज्यूमिंग। इसका एरिया आप देख लो कितना है, इसका एरिया क्या होगा? दिस इज 50, दिस इज 5 इनटू सर्टेन डिस्टेंस ले लो, ये सपोज कर लो एक्स है टी टाइम पे। सो 1 सेकेंड में निकालते हैं, 1 सेकेंड में हाइट क्या जाएगा? तो बेसिकली 250 सेंटीमीटर क्यूब जा रहा है पर सेकेंड। इसका मतलब है इन 1 सेकेंड, am I audible? So in 1 second, what will be the volume getting consumed? There is lots of noise coming suddenly. So this is your 50, and this is your 5, and this is your, let's say, x in 1 second. ठीक है? So in 1 second, how much height it is covering? अगर आप इसको ध्यान से देखो तो this is 251 centimeter. So 1 centimeter per second height will increase of the water level. Done it?
So in t time, how much height will be there? Xt. In 1 second, 1 centimeter. So I mean velocity मैंने निकाल दिया. Velocity is what? 1 centimeter per second. इसको v बुला लो या फिर x मैं बोल रही हूँ. X is the height that it is filling in 1 second. So this is 1 centimeter per second. In 10 seconds, how much height it will cover? So 10 into 1, that is 10 centimeter. So up to 10 centimeter, there will be what? Up to 10 centimeter, there will be water. And then rest is your 40 centimeter, जिसमें तुम्हारा क्या होने वाला है? Air होने वाला है. You will calculate it then. ठीक है? तो तुम लोग इसको ध्यान से सोच के समझ के कर लेंगे. And I know you will be able to do this. So thank you. One question is left. वो मैं कल उसको देख लूंगी. ठीक है? तो इसको करके आना तुम. ठीक है? रेस्ट करो, लंच करो, रेस्ट करो. ओके, 4 बजे से केमिस्ट्री का क्वेश्चंस करोगे तुम लोग. तो ऑल द बेस्ट. थैंक यू. बाय. कोई डाउट हो, यू कैन लेट मी नो इन द ग्रुप और यू कैन टेक्स्ट मी. और हर्षिता, तुम्हें मैसेज पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है. डोंट फील लाइक आई हैव ब्लॉक्ड यू. आई एम नॉट डन इट. लेट मी चेक. अभी मैं मैसेज करके देखती हूँ तुम्हें क्या क्यों नहीं जा रहा है. मतलब आई एम रियली कंफ्यूज. आई हैव सेंट यू मैसेज राइट नाउ. गया है क्या? तुम ही हो ना वो? यस. हर्षिता, चलो ठीक है. ठीक है, तुम चेक कर लेना. ओके, बाय एवरीवन. टेक केयर.